Hello students. Today in this video we are going to study about the combination of resistances. So in a circuit, when we have a number of resistors placed in a certain order to get a desired value of current in the circuit, then that is called the combination of resistances. Means we combine more than one resistors to attain a particular value of resistance so that we can get the desired amount of current in that circuit. That is called combination of resistances. Now this combination of resistances can be in series form, it can be in parallel form in any circuit, or it can be in both, or we can say in mixed form. Means in a circuit there are certain resistances that are placed in series form while others are placed in parallel form, then we call it as mixed. The resistors can be connected as in series, can be connected as in parallel, as well as both together in a same circuit, then we called it as a mixed combination or a mixed circuit. Then here comes a new term called equivalent resistance. What is equivalent resistance? This is important to know. If I have a circuit in which a number of resistors are combined in either series or in parallel or in mixed form, then what I want to do, I want to replace all those resistors with a single resistor. क्या करने वाली हूँ मैं, उन सारे रेजिस्टर्स को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टर को अप्लाई करूँगी जिसका रेजिस्टेंस इतना हो कि उस सर्किट के से मिलने वाले करंट पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, एज वेल एज उस सर्किट के लिए जो टर्मिनल्स हैं बैटरी के, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, दैट मस्ट बी कांस्टेंट. Means that there is no change in the current in the circuit as well as in the potential difference between the terminals of the combination. So अगर आप number of resistances को replace कर सकते हो किसी एक single resistance से, so that वहाँ पर ना तो current का change हो circuit में and neither there is any change in the potential difference between the terminals, then that single resistance जो आपने बहुत सारे resistance की जगह पर लगाया है, that is called equivalent resistance of all those resistance जिनको हमने replace किया. So इनको हम words में define कैसे करेंगे, that if a combination of two or more resistances in any electric circuit are replaced by a single resistance such that there is no change in the current in the circuit, and in the potential difference between the terminals of the combination. Then that single resistance is called equivalent resistance. All right.
Means if I have a number of resistances in any circuit and I replaced all those resistances by a single resistance such that कि वहाँ पर ना तो कोई करंट में चेंज आएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा, इन दैट केस दैट सिंगल रेजिस्टेंस जिससे मैंने उन सारे कॉम्बिनेशन को रिप्लेस किया है दैट विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. नाउ द combination of resistances as we see is of either of series or of parallel kind. मिक्स कैटेगरी में बोथ प्रेजेंट होंगे, तो हमें जो रूल्स पढ़ने हैं वो या तो सीरीज़ के लिए पढ़ने हैं या पैरेलल के लिए पढ़ने हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट द सीरीज़ फर्स्ट. So what is the next topic that we are going to study is resistances in series. When we say that resistances in series, तो हमें पता होना चाहिए कि सीरीज़ में हम resistances को कैसे कनेक्ट करते हैं. So if a number of resistances are connected end to end, suppose I have 2 or 3 resistances or they all are connected by their such that end of one is connected to the end of another, then such system is called resistances in series. It can be understood by a diagram, like it should be like this, that resistance first is connected to the ends of resistance 2, second is connected to resistance 3. So this kind of circuit, and these all three are connected to a cell or a battery of potential difference V. So resistance R1, resistance R2, resistance R3. We consider that the potential drop across R1 is V1, across R2 is V2, and across R3 is V3. Alright, so what we have three resistances R1, R2, R3 connected in series and further connected to a cell of potential V, and because of this cell the potential drop or potential difference set up across these resistances is V1 for R1, V2 for R2 and V3 for R3 respectively. Now what we want to calculate is कि अगर हम इन तीनों की जगह एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाएं कि इनके पोटेंशियल डिफरेंस पर और इस सर्किट में फ़्लो होने वाले करंट पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, दैट मीन्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट वी वांट टू कैलकुलेट. ओके, सो वी नो दैट यूजिंग ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है? By Ohm's law we have V is equal to IR. So if we see in this circuit, current will flow from positive terminal to negative terminal. Now the rule, or we can say law of resistance in series, is the current in the circuit or current through each resistance is same. If the resistances are connected in series, then current through each resistance is same. तो जितना करंट यहाँ से जाएगा, फ्लो होगा, सेम करंट हमें हर रेजिस्टेंस में मिलेगा. मीन्स I अक्रॉस R1, I अक्रॉस R2, I अक्रॉस R3 एंड I इज़ हेयर ओनली. सो पूरे सर्किट में हमारे पास करंट कितना है? I. सो इस करंट I की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट कैन बी गिवन बाय यूजिंग ओम्स लॉ. सो V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3. Now these are the potential drops across the three resistances R1, R2 and R3. Now what we want to find is कि हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटाकर एक नया रेजिस्टेंस इसकी जगह लगा रहे हैं जिसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सच दैट कि इस सर्किट में कोई फ़र्क नहीं पड़े. कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब है कि जितना करंट था उतना ही करंट अभी भी रहेगा. सपोज़ बिकॉज ये सीरीज़ में थे तो मैं इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिनोट कर देती हूँ RS से. देन वी हैव टू कैलकुलेट कि RS कितना होगा. ऑलराइट, नाउ इफ़ RS इज़ द equivalent
resistance, then we must have, according to Ohm's law, V is equal to IRS. This is V, because we don't want to change any factor in the circuit. V is equal to IRS. All right, but V is equal to, V क्या है? V is equal to sum of potential drops across individual resistances. मीन्स जितना इस सर्किट में इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की वजह से ड्रॉप हुआ उन सब का सम विल बी इक्वल टू V, बिकॉज ये करंट कहाँ से आ रहा है? यहाँ से. ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा, और वी कैन से दिस V इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर R1, R2 एंड R3. सो वी कैन राइट दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. Now substituting these values of V, V1, V2 and V3, we get IRS is equal to I1 नहीं होगा क्योंकि करंट तो सेम रहता है रेजिस्टेंस सीरीज़ में. सो इट विल बी I फॉर ईच टर्म, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. Now I will be cancelled out and we get the equation RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So this equation represents the equivalent resistance for the above circuit. So if we have n circuits, अभी हमारे पास three resistances थे. If we have n resistances in series, we are only talking about series, then this relation will be RS is equal to R1 plus R2 up to Rn. This is the required value of equivalent resistance for n resistances connected in series. Hence, when a number of resistances are connected in series, their equivalent resistance is equal to the sum of the individual resistances. So equivalent resistance की value in case of series will be the sum of individual resistances. Alright, now here are some laws for resistances in series. That law number one is current through each resistance is same. हमने देखा भी है ये अभी कैलकुलेशन में. current through each resistance is same. नेक्स्ट थिंग जो हमने देखी, दैट जो हमारा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है वो इंडिविजुअल ड्रॉप्स के सम के इक्वल होगा. टोटल पोटेंशियल ड्रॉप is equal to sum of potential drops, means V1 plus V2 plus V3. okay, now third one is कि जो आपका इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप है हर रेजिस्टेंस पे वो प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पे. इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू पे. मींस अगर R1 R2 से ज़्यादा है तो R1 का पोटेंशियल ड्रॉप V1 V2 से ज़्यादा होगा. मींस अगर R1 R2 से ज़्यादा है तो V1 V2 से ज़्यादा होगा. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उस पर उतना ज़्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा. दिस इज़ द लॉ नंबर थर्ड. नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अभी हमने देख ही लिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. दिस इज लॉ नंबर 4. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. मीन्स जितने भी रेजिस्टेंसेस आपने लिए, सपोज 3 रेजिस्टेंस हमने लिए और इन तीनों में से सबसे बड़ा था R3, तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है वो इस R3 से बड़ा होगा. और ये ट्रू भी है क्योंकि R3 में आप कुछ ना कुछ ऐड करोगे.
तो अपने आप जो आपके पास आंसर आने वाला है इट विल बी मोर देन दैट R3. Similarly, for n resistances, suppose the maximum resistance is of the number R10. ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन सा है? R10. ये हमने कंसीडर कर लिया कि R10 जो है हमारा वो सबसे मैक्सिमम वाला है. तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू इस R10 से ज़्यादा ही आने वाली है. क्यों? क्योंकि आप R10 में बाकी सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर रहे हो. तो जब आप उसमें एक भी अगर आपने उसमें ऐड किया तो वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, और आप तो ज़्यादा ऐड कर रहे हो. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी मोर देन द मैक्सिमम या लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. जो भी आपका लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू से ज़्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा आपको मिलेगी. दैट इज़ ऑल अबाउट द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़. नाउ कम टू द रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. In case of parallel resistances, now connection is not like that end to end. In this case, all the resistances are connected between two common points. How they are connected? They are connected between two common points. Suppose we have three resistances R1, R2 and R3. Then they are connected between two common points like this. Now these are the two common points जिनके बीच में ये resistances connected हैं, and then they are connected to a cell of potential V. Now let us consider their names R1, R2, R3. The current coming out of the cell, that is I, will be splitted into three sections at point A and become I1, I2, I3. अब यहाँ हमारे पास सीरीज़ जैसा नहीं है. सीरीज़ में वी हैव अ सिंगल टर्मिनल और सारा करंट एक ही टर्मिनल से जाता था, दैट्स वाई वो डिवाइड नहीं होता था. बट यहाँ क्या हो रहा है, पॉइंट ए पर हमारा जो वायर है सर्किट का, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट टर्मिनल्स. तो तीनों टर्मिनल्स में करंट जाएगा एंड दैट करंट विल बी I1, I2, I3. अगेन एट पॉइंट बी this current come and join and will be equal to I, and the circuit completes like this. All right, now same हम यहाँ पर करना चाहते हैं काम. What we want to do, we want to form an equivalent resistance in the circuit so that there is no change in the current as well as in the potential difference between the terminals. What we want is a equivalent resistance. Now in this case of parallel, I consider equivalent resistance as Rp. इन तीनों को रिप्लेस करके हम एक सिंगल रेजिस्टेंस Rp लगाना चाहते हैं सो दैट सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा था उसमें कोई चेंज ना आए, एज वेल एज जितना पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के बीच में सेटअप था उसमें भी कोई चेंज नहीं आए. सो नाउ using Ohm's law, what we have this time, currents are different, resistances are different, but these all three resistances are connected between two same points A and B, so potential for each terminal will be same. This time potential across R1, potential across R2 and potential across R3 will be equal to V. So using Ohm's law, what we can write is I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2 and I3 is equal to V upon R3. Alright, R1, R2, R3 are three resistances connected in parallel. Also we can see that this current I splits into three sections I1, I2, I3 and again merge as at point B and becomes I. So we can write I is equal to I1 plus I2 plus I3. Okay, now if Rp is the equivalent resistance, then using Ohm's law in this case, what we get will be I is equal to V upon
आर पी मीन्स ये जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर पी. नाउ सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज ऑफ I1, I2 and I3 in this equation, what we get is V upon Rp is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. V will be cancelled out and we get 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the formula that gives equivalent resistance when the three resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel. Now if we have n resistances, then the relation will be 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 up to 1 upon Rn. Right? So when a number of resistances are connected in parallel, then the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocals of individual resistances. Alright, the reciprocal of equivalent resistance of the circuit or of the combination is equal to the sum of reciprocals of individual resistances. This is for parallel combination. Now here also there exist some laws in case of parallel. What are these? Law number 1 is potential drop across each resistance is same. ये हमने अभी डेरिवेशन में देखा भी. Since these are connected in between two same terminals, so potential drop इन तीनों के across equal होगा. So potential drop across each resistance is same. Second, total current, that is I, is equal to the sum of the currents through individual resistances. Total current I is equal to the sum of I1, I2, I3, or we can say that total current I is equal to the sum of currents through individual resistances. Right? Law number 3rd. Currents I1, I2 and I3 are inversely proportional to the individual resistances. Individual currents are inversely proportional to the individual resistances. Here we can see this. Individual currents are inversely proportional to individual resistances, or we can say that जितना बड़ा resistance होगा उस terminal में उतना कम करंट फ्लो करेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस की एबिलिटी क्या है? करंट को रोकना. तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उस टर्मिनल में उतना कम करंट पास ऑन होगा. I1 and R1, I2 and R2, I3 and R3 are inversely proportional to each other. Means individual current is proportional to 1 upon individual resistance, or we can say that inversely proportional to individual resistance. Next law is this only कि जो आपका reciprocal है equivalent resistance का वो equal होगा sum of reciprocals of individual resistances. Alright, reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocals of individual resistances. And the last one is equivalent resistance is always less than the smallest individual resistance. Suppose I have n resistances, and out of these n resistances, smallest one is R4. Okay, so जो भी मेरा equivalent resistance होगा, it must be less than R4. ये निकल कर ही R4 से
कम आएगा। आप जब भी इसको कैलकुलेट करोगे ये हमेशा स्मॉलेस्ट से कम निकल के आएगा। ऑलराइट, so what is the last law for this? The equivalent resistance is less than the smallest individual resistance. This was all about the resistances in parallel.